हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अपने घरों में सेफ होंगे बिल्कुल। और जिससे कि हम सब लोगों को पता है कि सेकेंड वेव के बाद सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो गई है। सो प्लीज़ ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बी सेफ, बी एट योर होम एंड फॉलो द रूल्स, ठीक है। एंड अगर आपने यूपीएससी क्लियर किया है, यूपीएससी मेंस क्लियर कर चुके, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं हो सकता। तो आपको माचो मैन या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन और सुपर कूल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टे एट योर होम, ठीक है, बी सेफ। सो चलो लेट्स टॉक अबाउट द पेंटिंग। सो आज हम ड्रॉ करने वाले हैं गॉडेस दुर्गा, जिसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट है एक्रिलिक पेंट की। आप कोई भी एक्रिलिक पेंट यूज़ कर सकते हो, किसी भी कंपनी का, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए, ठीक। तो सेकंड थिंग जो हमें इसके लिए चाहिए वो है स्पंजेस, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिलता है, कोई भी स्पंज नहीं मिलता है, तो वो बर्तन मारने वाला स्पंज यूज़ होता है, वो आपको इजीली अवेलेबल होगा किसी भी शॉप पे, आप वो यूज़ कर लें। तो उसके बाद हमें चाहिए कैनवस, ठीक है। आई विल प्रेफर कि गाइज डोंट गो फॉर द कैनवस बोर्ड, दे आर रियली वेरी एक्सपेंसिव, ओके, स्पेशली व्हेन यू आर बाइंग अ बिग वन। तो रादर देन दैट गो फॉर अ कैनवस क्लॉथ। आपको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाएगा इन अ वेरी लेस अमाउंट। आई बॉट 5 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर 700 रुपीज़ एंड बहुत टाइम से मेरा चल रहा है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। इन केस यू आर वरीड अबाउट कि हम लोग उसे बाद में फ्रेमिंग कैसे कराएंगे, और इफ़ वी वांट टू लाइक पुट इट ऑन द वॉल, हाउ विल वी हैंग इट और समथिंग एल्स, तो यू कैन गो टू द नियर बाय शॉप जहाँ पे फ्रेमिंग का काम होता है। वो लोग आपको कैनवस क्लॉथ फ्रेम करके दे देते हैं बोर्ड पे, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो हमें चाहिए ये बनाने के लिए, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो पहले थोड़ा आइडिया के लिए आप रफली पेंसिल वर्क कर सकते हो। मैं कुछ स्पेसिफिकली बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं कर रही, आई एम जस्ट शोइंग अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस। नाउ इसके बाद वील स्टार्ट पेंटिंग। मेरी वीडियो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, तो थोड़ा सा पार्ट मैं पेंटिंग का कवर नहीं कर पाई, तो इसलिए वील स्टार्ट विद द फेस। पहले उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होएगा, मैंने बस बैकग्राउंड में थोड़ा ऑरेंज पार्ट पेंट कर दिया है। आई एम यूजिंग येलो टू हाईलाइट द लोअर पार्ट एंड ऑरेंज। मेक श्योर दैट यू ब्लेंड इट वेल। टू हाईलाइट फॉरहेड आई एम यूजिंग रेड शेड। For the blouse, I'll use red, and to outline it, I will use a darker shade of brown. Make sure you blend it well, otherwise the acrylic paint will dry out if you leave it for a longer duration. At every place where I need to highlight something with a lighter shadow, I will use yellow, and for a darker shadow, I will use red or brown. In the same way, you can complete the hands and then just outline it with plain black. That's all. The background part will be covered with the shades of orange. Whenever there will be a partition, one side of the partition will be having darker highlights to show it shallow, and the another will have lighter one so that we can show the partition in between. Now I'm using yellow and red
in her dress so that because of red I can differentiate between her body and her clothes. Now we will use white to highlight the yellow stripes in the same way when we used yellow with the orange to provide highlights in her body. To show the crease on her dress, I will use brown color. Once you're done with the blending part, then keep on outlining wherever you complete. So background will be needing a lot of different shades of red, yellow and brown so that we can add on those highlights and that beautiful effect in the background. For this, make sure that you choose the right color at the right place and blend it well so that it doesn't look odd. Before starting work on lion detailing, we will give it a base color. It will be lighter shade of yellow so that we can use the darker shade of yellow to provide highlights, reflection and shadows. After mixing little brown and yellow, it is giving me a mustard shade that I am using to highlight the hairs and detail it. After this, we will use black for the hair strands. You can keep on blending and providing layers until and unless you get the perfect shade that you want. As we are working on canvas, providing a lot of layers will not tear up your sheet. For the lower part where we are imagining it's a kind of monster or an evil soul, we are going to put it with a purple color. Wherever highlights are required, we are going to use white and black. When lighter highlight is required, for that we will use white shade, and for bringing a black shadow, a darker shadow or a division, we are going to use the black one. The leg of this devil will be red and tail will be black.
So now our painting is almost done. All we have to do is cover up the blank spaces, that is our background, with different shades of orange, red, yellow and brown as I mentioned before. You can use the darker shades in the starting corner, and in the lower side you can use the lighter shade, like I'm using yellow because it will help me blend the orange well with the sheet. So that's why I'm using yellow, and at some places I'm using brown. Over here I am using the golden paint. It is metallic gold pearl by ACRYLIC. So this is our final look. Now I hope you know how to make this painting. अगर इसके बाद भी कोई भी doubt हो तो you can always text me on my Instagram. I'll mention my Instagram in the description below. I hope you like the video, and do make sure that you like it, subscribe it and share it with your friends. Thank you for watching.